Hello everyone, and a very good morning to all of you, and welcome to BYJU'S Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. As we all know, from Monday to Thursday, 11 a.m. in the morning, we come up with the Hindu analysis. Today is 1st August, and we are here with the Hindu analysis of 1st August. So if I'm audible, just write in the comments, yes sir, you're audible. Yes, so today is Tuesday. Am I audible, guys? Aaj Tuesday hai. And we are here with the Hindu analysis of Tuesday. So first of all, let's talk about this. Give us complete breakdown of 6,000 FIR. Supreme Court says to Manipur government. This will be discussing it. Then we'll be discussing about August to see below normal rainfall, says predicts IMD in Indian Meteorological Department. So that is what we are going to discuss. Okay. So first of all, I hope you are aware that there was a video which got viral regarding Manipur and all, unfortunate video. After that, the Supreme Court took the suo motu cognizance, and it is said that almost 6,000 FIRs have been filed about these incidents and all, crime and all. Now the Supreme Court wants the complete breakdown of 6,000 FIRs. What is meaning of breakdown? मतलब सबको एक करके बताया जाए, in the sense, like for example कि 6,000 FIRs have been filed in what case? It means you have to tell me how many cases of FIR is related with murder, how many FIR is related with arson, how many, or arson matlab to aagjani, burning houses or burning cars and all. How many cases related with violence against women? So you have to actually, this is what the Supreme Court has asked the Manipur government, that tell me that in these 6,000 FIRs have been filed. So which cases for how many FIRs for which cases? Tell me, in detail. That is what the Supreme Court has asked. Okay. Court proposes appointing its own SIT, Special Investigation Team. So the court might be soon setting up its own Special Investigation Team. It might be like, generally an SIT is generally the police officials or lawyers and all. So might be the Supreme Court or a retired judge. So Supreme Court might set up its own committee of SIT, and these SIT might go to Manipur. This is, let's wait for it. Might be these things to happen because the court has proposed such thing. So bench surprised to find central and state government groping in dark facts and all. So actually the judge was slightly not happy. Actually, that is what it was in the news. Okay, so Manipur government is said to have registered during the ethnic clashes. So the Supreme Court has asked, tell me about each and every cases and all. So that is what now today at 2 p.m. the court will hear the matter further and all. So the court was shocked to know that Manipur police took 14 days and all. So actually the judge actually showed a sort of unhappiness about it and all. Okay, so that is what you should be knowing it. Okay, yes. Now in this article, actually the concept of zero FIR has also been discussed. Okay. And I think for the past 2-3 days it has been coming in the news. So that is why zero FIR can be asked. What is a zero FIR? Your options are FIR filed in the midnight, FIR filed by army personnel, FIR filed in some other police jurisdiction, FIR filed after court order. Your time starts now. Zero FIR का exactly मतलब क्या होता है? सबको like button press करते जाओ. Everyone please press the like button, guys. Zero FIR has been coming in the news for the past 1 week. If you are reading it, then you will get to know. You must have seen it. Zero FIR क्या होता है? So yes, very good. Namraftab, Manu, Mishra, Pranjali, Saurabh, Alok, Gauri, Sania, Priya, Nitika, you all right. FIR filed in some other police jurisdiction. Yes, Jagriti, yes, you all right. C is the right answer to this question. इस तरह की आर्टिकल काफी आ रही. Manipur violence, what is zero FIR and why it is registered. And there was a committee. Can you please tell me a committee recommended for filing? What was the name of the committee which actually talked about that zero FIR needs to be registered? It is also related with women's crime. So this committee was related with that. Crime against women के लिए committee बनाई गई थी, and that committee recommended it. देखो zero FIR होता क्या? जैसे for example, this is there is a jurisdiction of every police station. जैसे ये है, मान लो, this is police station 1, this is police station 2. This is the jurisdiction I'm saying. उस area में जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ना. This is police station 3.
this police station 4. Yes, very good. Justice Verma committee. Good. Gauri, Pranjali, Anamika, very good. Sania Ansari, yes. Maan lo, for example, if there is a crime against women happened this here. Okay? Yahan pe bordering area mein hua. And this lady is not aware that where is my police station. So she mistakenly goes to this police station. And she tells about it. Now, what happens is generally the police wala says, the police in charge says, we go to that police station in which the crime has happened. Maybe in some cases it might not be, I mean, the lady might not be aware of it, or maybe there can be a lot of reasons she might not go here back. Okay, so in that case, police station 1 is also supposed to file an FIR even if the crime has not happened in its jurisdiction. That's called as zero FIR. कई बार ऐसा होता है कि वो उस जहां पर हादसा हुआ या इंसिडेंट हो वहां वापस नहीं जा सकता है या जा सकती है, कोई भी कारण हो सकता है. There can be many reasons. So that is why this cannot be the reason of not filing a FIR, that this has not happened in my jurisdiction, so why should I bother and all. Okay, after all, देखो आपको शायद पता होगा कि जैसे ये सारा पुलिस थाना है, ये सारा तो एक एसपी के अंदर में होता है ना. So it comes under the entire one district. Yes, है ना. So these things can happen. हो सकता है दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी जरूरत पड़े तो FIR फाइल करने की. There can be reasons and all, especially during riots and all these types of incident. So that is why आपको पता होगा, देखो यहाँ लिखा है, especially after that you can say this is a zero FIR. It registers an FIR to transfer it to the relevant police station. Now it is the duty of the police station 1 to transfer this FIR to the police station where actually in the jurisdiction of which the incident have happened. ठीक है, जहां पर हादसा हुआ है. Okay, the provision of zero FIR came after recommendation in the report of Justice Verma panel. I hope you are aware. After a very unfortunate incident of 𝗟𝗴𝗃 rape case, actually this Justice Verma committee was set up. I hope you are aware of that. So ये zero FIR आपको पता होना चाहिए. Okay, so I think this is crystal clear. Now let's talk about another page number 4 states में एक article है. Delhi Services Bill likely to be tabled today in Lok Sabha. I hope you are aware of this, that Supreme Court had passed an order that the services matlab services related means who should be controlling IAS officers and DANIX officers. Okay, so actually this was, I mean, the Supreme Court passed an order and said it's the government of Delhi, means the Mr. Kejriwal can handle it. Then later on the ordinance was passed, and this ordinance made this actually. Okay, there should be a National Capital Service Authority would be there. National Capital Civil Service Authority where Chief Minister, Chief Secretary and Principal Home Secretary is there. Okay, and in case of difference of opinion, it will go to the Lieutenant Governors, and Lieutenant Governor's decision would be the final. So the critics have said that it is diluting the judgment of Supreme Court and all. So this was an ordinance and now it will be passed as a bill. इसको अब as a bill present किया गया है. So it might be passed very soon. That is why it was in the news. आप समझ गए ना? You understood it? Earlier the Supreme Court had said now it is the Chief Minister's power or the government's power to transfer an officer. But this ordinance amendment actually talks about 3 people: Chief Minister, Chief Secretary and Principal Home Secretary. Generally these 2 people are appointed by central government. Okay, and Chief Minister is only there. So and if there is a disagreement finally, then Lieutenant Governor's opinion would be the final. That is what is being talked about. Okay, okay, so that is what you should be knowing about it. Okay, okay, before moving on guys, we are providing 90% scholarship on our paid classes. So 6th August ko 11 AM in the morning we'll be having a scholarship test. If you qualify it, you will get up to 90% off. The link is given in the description from where you can register for this course. And yes, we are providing 2024 ke liye we are providing these things, 25 plus CLAT mock test, HET, 15 ALET mock test. So we are running a test series also for this year 2024. So if you are interested, you can go for this test series. Okay, इस number पे call करो 9538895678 पे, you can call on this. And 2024 का comprehensive course भी है, crash course and 190 plus live classes, 300 plus recorded videos, 10,000 plus practice question are there. So इस पर call करो. We are providing monthly magazines also. बच्चे पूछते हैं सर past current affairs कहाँ से cover करें? So you can cover the past current affairs from this CLAT Ignite magazine which we provide. Okay, yes. Then 2025 के लिए also we have launched the course. So many people have also joined this course, है ना? So 380 plus hours of live classes, 300 plus recorded videos, 55 plus mock test, 10,000 plus practice question, है ना? So these are the things. If you have any query, call on this number. ठीक है? Okay. Chalo, let's start with editorial.
So let's start with these two. First of all, let's discuss this one. Article 370, hearing the original text and the spirit count. So I hope you are aware. Article 370 is actually which got scrapped on 5th August 2019. This provided some special power or a special provision for the state of Jammu and Kashmir. I hope you are aware of these things. Dhananjay, please call on this number. They will tell you. इस पर आप कॉल करो. They will explain की टेस्ट सीरीज कितने का है और. Okay. 9538895678 पे. Okay, now, so Supreme Court to hear Article 370 plea from August 2 says no more additional affidavit. तो अभी ये recently news था, I mean 22th July को, that the Supreme Court would be hearing the matter regarding the scrapping of Article 370. So petitions have been filed and it will start hearing from August 2. So August 2 मतलब from tomorrow onwards. Okay, so you will be seeing these things in the news. अब देखो, he has gone very much in detail, तो आपको कुछ basic ideas होने चाहिए. First की, of course, it provided some special provision and all. 370 है ना. So it said कि on August 2, that is tomorrow, they will start hearing the oral arguments and all. Okay, yes. Then I hope you are aware कि that is about I mean state was also कि 5th August 2019 को, before it Jammu and Kashmir was a state which got divided between, it was transformed into two union territories. So Jammu and Kashmir Union Territory and Ladakh Union Territory. I hope you are aware of this. Okay, so this decision was made at a time when the state was under president's rule. So actually there was president rule was there, means I hope you are aware, Article 356 and all, with no elected legislative assembly in place. So of course when there is a president rule, basically the for all power is in the hand of governor, and there is no legislative assembly in that state because of president rule and all. Okay, these decisions were made at a time when the state was under president rule. We have discussed it both in the lead up to the events and all. इसी को देख लेना. Okay, so in other words, the question will be whether the decision regarding Article 370 is ultra vires the Constitution. Ultra vires मतलब समझते हो? Ultra vires means outside the provision of Constitution. So that is what the Supreme Court will be hearing this matter. Whether it is ultra vires, this decision regarding Article 370 scrappage is against the Constitution or not. Okay. Independence of India Act was passed in 1947, which established Indian dominion, allowed Government of India Act 1935 to serve as interim constitution until the country adopted it. तो वही बता रहे हैं कि before actually we adopted the constitution, Government of India Act 1935 was working as a constitution. ठीक है. In the case of Jammu and Kashmir, the instrument came with qualification that were ultimately written with Article 370 and all. तो ये सब बात आप जानते हो history में. No need to go very much in detail. That yes, these caveats were put and all. तो ये सब वो बता रहे हैं. ठीक है. अब now, but after 1957 when Jammu Kashmir Constitution came into force, its constitutional assembly was disbanded and replaced with legislative assembly and all. अच्छा, पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर करो. हाँ. Yes, who was instrumental in drafting Article 370? Your options are Jawaharlal Nehru, Rajendra Prasad, 𝗏𝗏 𝗏 𝗏𝗂 𝗏𝗏 Your time starts now. हाँ, ये actually article जो है critical है of the decision of scrapping of Article 370. बताइए इसका आंसर. Who was instrumental in drafting Article 370? बताइए. This is mentioned in this article, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. The name of the person is mentioned, बल्कि इसी next passage में mentioned है. Yes, D is the right answer. 𝗏𝗏𝗀 Iyengar. Yes, धनंजय, जागृति, गौरी, आलिया, नितिका, प्रिया, हिमांशु, सानिया, Ansari, you are right. So Article 370, however, remained unaltered. Its chief drafter 𝗏𝗏𝗀 Iyengar had described the state and all. अब उसको बहुत डिटेल में जा रहे हैं कि अब इतना डिटेल जाना नहीं. 370 clause 3 में there is specific thing mentioned and all. ठीक है. तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लो. 𝗏𝗏𝗀 Iyengar, he was actually minister without portfolio in the first ministry and looking after mostly after Kashmir affairs and all, later Ministry of Railways, and he was instrumental in drafting Article 370. So just have an idea about it. ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिएगा. He is a former civil servant as well. देखो, इसको बहुत सारा आर्टिकल्स इन्होंने समझाया. इतना आर्टिकल पे नहीं जाना, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ. सी, basically it was mentioned कि in order to scrap Article 370, अगर इसको खत्म करना है, there is needs of a proposal of permission of Constituent Assembly of Jammu and Kashmir.
जम्मू कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसमें दे मेड देयर ओन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, सो द परमिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुड बी टेकन. ओके, बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नॉट मेंशन्ड. So, according to Article 367, the interpretation was done that Constituent Assembly, instead of Constituent Assembly, the Legislative Assembly, which was, I mean, Legislative Assembly मतलब जो कि हर state में होता है. This you will find it in every state, है ना? Legislative Assembly, the members are called as MLA. I have taught in the paid classes Legislative Assembly, Legislative Council. इसे बताया मैंने. Okay. So it was interpreted that if the Constituent Assembly is not mentioned, then it means it is Legislative Assembly. And president rule was there, so even legislative assembly was not there. So legislative assembly now means the governor's permission, because when president rule is there, when this decision was taken, there was president rule in Jammu and Kashmir. So indirectly the governor's permission was taken and all, and this decision was done and all. Okay, so that is what I mean. He is criticizing it that this is not the correct way and all. उसपे इतना detail नहीं जाना. I have given you the basic idea about it. The criticism is a different thing. If you are agree, it's fine. If you do not agree, that's your opinion. Okay, now a colorable, so he's writing it as a colorable legislation or colorable exercise of power. So actually he is critical of this decision. Colorable एक concept होता है doctrine of colorable legislation, इसको कहते हैं doctrine of colorable. Have you heard this before? So he is saying कि this decision of scrapping Article 370 was this. Okay, इसमें ये होता है कि मतलब उसमें होता क्या कि when a legislature does not have domain to make laws or the power to make laws, it makes it in indirect way. ठीक है, तो मान लो for example I'm just giving us some other example. जैसे मान लो कि कोई चीज है, let's say state legislature wants to make laws in a subject which is in union list, तो नहीं बना सकता है, तो indirectly law बना देगा. So it will make a law on any state list which is going to affect this one indirectly, because it cannot make it directly, so it makes it indirectly. So this is called as doctrine of colorable legislation. इन्हें आपके पास पावर नहीं है लेकिन तो भी आप यूज कर रहे हो indirectly. Okay, so I mean the author is saying that this decision was also according to the author colorable legislation. आप समझ रहे हो ना, मतलब ये कि indirectly आपके पास पावर नहीं है लेकिन तो भी आप पावर यूज करने के लिए घुमा के यूज कर रहे हो. Okay, so that is the meaning of it simply. Okay, so that is what he is saying according to the author. ये कभी कभी डॉक्टर ऑफ कलरेबिलिटी हो सकता है, might be asked in exam, है ना, something which cannot do it within the constraint of government constitution, it colors the law with a substitute purpose. Okay, and allow it to accomplish its original goal. Okay, तो बताते हैं कि मेरा गोल कुछ और है और मतलब वो दूसरे तरह से लॉ बना करके कोई और चीज इंप्लीमेंट करते हैं. ठीक है, यू अंडरस्टूड इट, मतलब दैट इज व्हाट इट इज. ओके, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेना. डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबिलिटी के कुछ एग्जांपल्स भी हैं इन द पास्ट एंड ऑल. ओके, जस्ट सी इट. So president's order no doubt assert that it was made the concurrence of Jammu Kashmir and all. तो वही बता रहे हैं कि it was made concurrence of government of state of Jammu and Kashmir, but seeing as under president tour it was assent by governors. यही मैंने बताया ना कि ideally constituent assembly's permission should have been taken, है ना, for scrapping 370. So it was not present, so it believed that constituent assembly is nothing but legislative assembly. And since there was a president rule, legislative assembly was also not there. So basically it was governor. So governor's permission was taken. ठीक है, तो उसी को बता रहे हैं. दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड. मैंने बता दिया ऑलरेडी. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एंड बेसिकली ही इज क्रिटिकल ऑफ द डिसीजन. बस आप इतना समझ लेना. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे देयर वाज अनदर आर्टिकल कॉल्ड एज आर्टिकल 35 कैपिटल ए ऐसे लिखा हुआ है, एंड आर्टिकल 370 बोथ वेर एक्चुअली गिविंग सम स्पेशल पावर्स टू जम्मू एंड कश्मीर. 35 कैपिटल ए भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आफ्टर द क्लास इज ओवर. ठीक है, Now he is talking about this concept. ये concept कई बार न्यूज में आता है. asymmetric federalism, ये क्या होता है? You understand asymmetric federalism? What is the meaning of that? Now देखो, एक concept होता है federalism का. I have taught in the classes. Can anyone tell me? मैंने paid classes में बताया है. And when I was teaching basic structure of constitution, I have said कि which judgment of Supreme Court said कि federalism is the basic structure of constitution? Which judgment of Supreme Court said फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा है? कौन से जजमेंट में? देखो, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? यस, actually a system of government where there is both central and state government and both have powers mentioned, defined by the constitution, and like here is in the case of India 7th schedule is there.
बट एसिमेट्रिक का मतलब है सारी को बराबर नहीं ट्रीट करना है. सिमेट्रिक मतलब क्या? एवरीवन इज इक्वल. एसिमेट्रिक मींस नॉट ट्रीटिंग एवरी स्टेट एज इक्वल. लाइक फॉर एग्जांपल फ्रॉम आर्टिकल 370 टू, अगर आप ये पढ़ोगे ना 371, सो इफ यू रीड आर्टिकल 371, if you read article 371 capital A, 371 capital B, 371 capital C till 371 capital I, you will get to know there are a lot of states which have been given some special provision. खास के नॉर्थ ईस्ट में कहीं कहीं पे इस सब स्टेट्स में भी कुछ कुछ प्रोविजन है. Okay, so there are some special provision in the northeastern areas and in some other states which is not given to all the states. Yes, SR बोमाई केस. Yes, प्रांजलि, very good. सिर्फ एक बच्चे ने आंसर सही किया. मैंने एक पेड क्लास में पढ़ाया ये इन एसआर बोमाई केस. जब व्हेन आई टॉट एक्चुअली बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, आई हैव टॉट इट कि एसआर बोमाई केस सुप्रीम कोर्ट सेड दैट फेडरलिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एसिमेट्रिक फेडरलिज्म क्या होता है. ओके, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इट कि वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म इन अदर स्टेट्स. जैसे आपको पता होगा शायद इसमें कुछ कुछ एरिया में ऐसा होता है, देयर इज इनर लाइन परमिट रिक्वायरमेंट इन सम स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट. यानी even if you are an Indian citizen, you have to take permission to go on these areas. फिर आपने सुना होगा 5th and 6th schedule areas. They have also some special provisions and all. है ना, 5th schedule या 6th schedule areas में कुछ special provision होते हैं, है ना, rather regarding it and all. So that is what he is saying कि the same thing was there in Article 370 also that. ठीक है, so just have an idea about it. Okay, yes. तो आप समझिए hopefully. You are aware of that, है ना. वो एसआर बोमाई समझ में आ गया ना? कंफ्यूजिंग है क्या? कंफ्यूजन है क्या कुछ? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, क्रिस्टल क्लियर. नाउ अब ये चिप टैक्टिक्स, द पिच टू ड्रॉ इन सेमीकंडक्टर्स प्लेयर मस्ट गो बियॉन्ड इंसेंटिव्स एंड ऑल. अब देखो, आपको पता है, आई होप द गवर्नमेंट हैज मेड अ फ्रेश बिड टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर इन द कंट्री एट सेमिकॉन इंडिया summit last Friday. PM Modi told prospective investors that the government had drawn their suggestion after it and all. अब देखो, आपको पता होगा ये इसको क्या कहते हैं? आईसी कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप. ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स होते हैं. जैसे आपने ये देखा, हैव यू सीन दिस? दिस इज अ मदरबोर्ड ऑफ कंप्यूटर. जैसे आप कंप्यूटर का, व्हेन यू ओपन द सीपीयू, कभी मौका मिले सीपीयू खोलने का, सो व्हेन यू ओपन द सीपीयू, दिस इज द मेन थिंग. ये इसका दिल है, हार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन से. सो इसी में सारी चीजें, ऑल द डिफरेंट इंटीग्रेटेड चिप्स आर देयर. उसमें बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं विच आर एक्चुअली मेड बाय सेमीकंडक्टर, है ना. जैसे गैलियम इज देयर, सिलिकॉन इज देयर, आर्सेनिक इज देयर, है ना. सो दीज आर सेमीकंडक्टर मटेरियल. ठीक है, अब देखो होता क्या है, दीज आर एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज. आज के जमाने में सेमीकंडक्टर के बिना कुछ होता नहीं है. ठीक है, सो नाउ इट हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट सिलिकॉन इज आल्सो देयर. उसी से नाम पड़ा है. हैव यू हर्ड इट? देयर इज अ थिंग कॉल्ड एज सिलिकॉन वैली. जैसे इंडिया में सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं, यूएस में कैलिफोर्निया के एक रीजन है उसको कहते हैं ना. तो वही तो है. सिलिकॉन कहाँ है? सिलिकॉन इज एक्चुअली अ सेमीकंडक्टर. ठीक है, सिलिकॉन वैली मींस सिलिकॉन कम्स फ्रॉम द वर्ड, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन आईटी इंडस्ट्री, है ना. ऑल थिंग्स रिलेटेड विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन एंड ऑल. यस, तो वही चीज वही से आती है. द थिंग कम्स फ्रॉम देयर ओनली. सो द वर्ड सिलिकॉन, व्हाई आर वी कॉलिंग इट सिलिकॉन वैली? द रीजन इज बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर. नाउ अब देखो क्या होता है आज के जमाने में, सिलिकॉन, आई मीन सेमीकंडक्टर का बहुत अहमियत है. आई होप यू आर अवेयर. लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे यूएस वांट्स टू हैव अ गुड रिलेशन विद ताइवान. व्हाई? देयर लॉट ऑफ रीजन. वन ऑफ द रीजन इज एक्चुअली टू काउंटर चाइना, अग्रीड, बट वन ऑफ द रीजन इज टू हैव अ सेमीकंडक्टर, एंड व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट nowadays आफ्टर द राइज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री एंड ऑल. यस, हाँ, तो अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, नाउ अब देखो, यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट अभी एक रिसेंटली एक डील थी फॉक्सकॉन और वेदांता की. वेदांता इज एन इंडियन कंपनी एंड फॉक्सकॉन इज एक्चुअली ताइवान्स कंपनी. ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सम रीजन द डील गॉट ब्रोकन. डील टूट गई और ये भी रिसेंटली न्यूज में था that Foxconn dumps $19.5 billion Vedanta chip plan in blow to India and all. So I hope you are aware. So Taiwan's Foxconn withdrawn from this deal and all, which was actually which was not a good news for us, you can say. But yes, we can have some other provision. फिर और कोई रास्ता ढूंढेंगे. So that is why it was in the news. ये पूरा editorial इसी पर है basically. That the government has made a fresh bid. यानी फिर से ट्राई कर रहे हैं.
because one deal has been cancelled, so we are planning for another bid of a major global chip manufacturer in the country. At Semicon India Summit last Friday, PM Modi told to prospective investors that the government had drawn on their suggestion after first such conference and all. ठीक है, तो उसी की वो बात कर रहे हैं कि वी आर प्लानिंग फॉर सम अदर, जैसे किसी ने कैंसिल कर दिया तब दूसरा रास्ता निकालेंगे, है ना. सो वी विल बी सर्चिंग फॉर द न्यू पाथ और न्यू वे एंड ऑल. दैट इज व्हाट इज बीइंग डिस्कस्ड देयर. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी एक्चुअली इंडिया में उतना होता नहीं है प्रोडक्शन, बट अगर हो जाएगा सो दैट विल बी वेरी वेरी गुड, है ना. इट विल बी अ पार्ट ऑफ, यू कैन से, आत्मनिर्भर भारत इफ इट बिकम सक्सेसफुल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, है ना. ये लिखा ना कि फॉक्सकॉन वेदांता डील कैंसिल्ड एंड ऑल. Okay, so that is what Vedanta soon to have a world class tech partner for Semicon ambition after Foxconn breakup, है ना. हो सकता है आप दूसरा कोई पार्टनर ढूंढे. It will find out some other help and all. Yes, considered better than conductor. Yes, Pranjali. Actually, semiconductor अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, डायोड वगैरह, डायोड, पीएन जंक्शन, जितने भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये सब जो है ना सेमीकंडक्टर ही से बन सकता है. It cannot be made with conductor. ठीक है. So if you have read little bit about it, you are aware of this. जितने भी LEDs वगैरह होते हैं ना, LED, light emitting diode, वो भी उसी प्रिंसिपल पर वर्क करता है. All are actually semiconductor made. Recalibrating India's clean cooking strategy. Cooking strategy. ठीक है, यानी खाना बनाने का strategy. Generally we use LPG cylinders. So he is talking about the same. ठीक है, तो he is talking about the government has completed the LPG adoption and all. ठीक है, तो इसमें there was a Gramin Vitrak Yojana was launched in 2009. Now we have Pradhan Mantri Ujjwal Yojana to distribute. ये मैंने पढ़ाया paid classes में. Pradhan Mantri Ujjwal Yojana, I have taught it. So to distribute LPG to BPL women, है ना, below poverty line women, है ना. So these things and all is being discussed here. फिर वही बता रहे हैं कि in 2011 33% people were using cooking fuel. Now they are using 71%. तो पहले क्या यूज करते थे? दे यूज्ड कोल, जैसे कोयला यूज कर लिया या लकड़ी यूज कर लिया. नाउ दे आर कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन एंड दे आर एक्चुअली ऑफ कोर्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज. इसीलिए एलपीजी जो यूज करने के लिए कोशिश किया जा रहा है, पूरा यूज. देयर शुड बी अ एफर्ट टू एंश्योर दैट पुअर्स शुड आल्सो बी यूजिंग एलपीजी सिलेंडर्स, नॉट कोल और वुड और समथिंग लाइक दैट. However, global events that unfolded since COVID-19 pandemic and ensuing loss of livelihood and income on the one hand and Russian invasion. अब देखो क्या हुआ है. Yes, because of COVID pandemic, for war, Russia-Ukraine war, and there are other reasons for price volatility. बहुत सारे कारण से क्या हो गया. Now again, actually, it have dented, मतलब impacted badly a near-term prospect of universal use of LPG. मतलब target ये था कि 100% people should be using LPG, but this target has been dented or affected. Why? Because of these things: COVID-19 pandemic, Russia-Ukraine war, and rise of prices of crude oil or something like that. ये सब के कारण जो एफर्ट था कि 100% एलपीजी हो जाए, वो शायद ना हो पाए. यही वो बता रहे हैं. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, है ना. सो देन पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर फूड ग्रेड डिस्ट्रीब्यूशन हैपेंड एंड ऑल. फर्दर नॉमिनल सब्सिडी ऑफ 200 per सिलेंडर वेयर गिवन नाउ. तो ये सब बता रहे हैं कि सिलेंडर को सब्सिडी वगैरह भी दिया जाता था एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. अब इसमें इतना नंबर्स वगैरह नहीं याद रखना है कि इतना परसेंट हुआ फिर इतना हुआ. आई मीन दैट यू आर नॉट सपोज टू रिमेंबर, है ना. हाँ, imported LPG, एक challenge है कि imported, yes, we are still importing a lot of LPGs and all. Okay, so that is also a challenge for us, especially when international prices hikes. देखो LPG cylinder जो होता है ना, ये सब of course natural gas is not found very much in India, so we have to import it from Gulf nations and all. Okay. हाँ, then India's clean cooking policy में, clean cooking policy मतलब ये कि भाई कि poor should not be using coal और वुड, ये सब ना यूज करे. तो इससे बहुत पॉल्यूशन होता है ना. कोल यूज करेगा, अब कोई पुअर है वो खाना बना रही है, उसके नाक में चला गया, है ना, तो वो भी तो पॉल्यूशन नुकसानदेह होता है ना. वुड है, लकड़ी भी, और वुड से अगर आप लकड़ी काटते जाओ, जंगल काटते जाओगे तो कोई लिमिट नहीं है ना. सो इट विल कॉज डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल. सो क्या एलपीजी ओनली स्ट्रेटजी? उसके अलावा भी और बता रहे हैं कि क्या एलपीजी के अलावा और सोल्यूशन है. सो इलेक्ट्रिक कुकिंग इज देयर, है ना. आपने ऐसा देखा हो कभी कुकर? हैव यू एवर सीन इट? किसने, कितने लोगों ने देखा है? ये इसको इलेक्ट्रिक स्टोव कहते हैं ना, क्या कहते हैं. मतलब इसमें ये होता है कि अगर आपसे इलेक्ट्रिक से कनेक्शन कर दोगे, सो यू कैन मेक द फूड एंड ऑल. इस पे खाना बन जाता है. इसमें कुछ बटन्स वगैरह होते हैं और डिजिटल होता है. कुछ लोग यूज भी किए होंगे शायद. सो ही इज आल्सो एक्चुअली गिविंग दैट एग्जांपल आल्सो ऑफ इलेक्ट्रिक कुकिंग की अगर वो ना हो पाए तो इसमें भी तो पॉल्यूशन नहीं होता है ना. सो दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि दिस कैन बी अनदर अल्टरनेट, है ना. अगर इफ वी प्रोवाइड एक्सेस टू 100% एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, अगर हर घर में बिजली प्रोवाइड कर दिया जाए, है ना. एक स्कीम है पीएम सौभाग्य योजना, है ना.
सौभाग्य योजना, यस। हाँ हाँ, इंडक्शन कुकर कहते हैं, यस, सम पीपल आर राइटिंग इट, यस, वेरी गुड, इंडक्शन कुकर कहते हैं, मैं भी नाम भूल गया था, इट्स कॉल्ड इंडक्शन कुकर। मैंने एक दो बार देखा है, आई हैव सीन इट वंस, और ये अच्छा ठीक ठाक काम करता है, ठीक है, यस। हो सकता है कुछ लोगों ने काफी यूज भी किया, सो दे आर अवेयर ऑफ दिस। हाँ, सो वही बता रहे हैं कि इफ वी आर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा तो शायद लोग ये भी खरीद सकते, या अगर कोई गरीब है तो उनको खरीद के दे दिया जाए। सो देयर कैन बी, लाइक लेट्स से देयर इज एन एग्जांपल दैट इफ देयर इज इलेक्ट्रिसिटी इन एवरी हाउसेस, देन द गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रीब्यूट दिस टू पुअर्स, ताकि वो इस पर खाना बना दे, लेकिन ये कि उनको ये सब आना चाहिए चलाने के लिए, दे शुड नो हाउ टू हैंडल इट। सो दीज आर द थिंग्स। ई कुकिंग, उसको एग्जांपल बता रहे, ई कुकिंग, ठीक है। जैसे क्या होता है, ई गवर्नेंस है ना, सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ई गवर्नेंस, इसमें बहुत सारी चीजें आ गई, जैसे ई पुलिसिंग हो गया, है ना, देन ई कोर्ट सिस्टम है, उसका एक एग्जांपल है सुपेस, जो कि पूछा भी था क्लैट 2023 में, है ना, ठीक है। फिर ऑनलाइन बहुत सारे और भी चीज होती है, ई पुलिसिंग हो गया, फिर ई एजुकेशन हो गया, है ना, ई हेल्थ हो गया, ऑनलाइन हेल्थ से डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हो। सिमिलरली ही इज टॉकिंग अबाउट ई कुकिंग ऑल्सो, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस में ई कुकिंग भी हो सकता है ना, व्हाई नॉट, सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो दिस थिंग्स यू शुड बी नोइंग इट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ चूल्हास बाय ई कुकिंग वुड आल्सो अवॉइड क्लाइमेटिक पॉल्यूशन, वही बता रहे कि अगर ई कुकिंग हो जाएगा तो क्लाइमेट पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट एंड ऑल, ठीक है। कार्बन मार्केट एंड ऑल, इमिशन कम हो जाएगा, इट वुड बी गुड फॉर अस, है ना, व्हिच वुड बी हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द पॉल्यूशन एंड ऑल। अब साइड में एक और आर्टिकल नीचे में, वी शुड टॉक अबाउट इट, ओवर द बॉर्डर लाइन पाकिस्तान शुड स्टॉप डिफरेंशिएटिंग बिटवीन टेररिस्ट एज गुड एंड बैड। मतलब द ऑथर इज टॉकिंग, इट्स एन एडिटोरियल रिटन बाय द हिंदू एडिटर्स, ठीक है। सो गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, इसको डिफरेंशिएट करना बंद कर दे, मतलब जो कोई भी बुराई है वो बुराई है, रॉन्ग इज रॉन्ग, वेदर आई मीन इट शुड नॉट बी कैटेगराइज्ड एज गुड और बैड, ओके। सो दैट इज व्हाट द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द टेरर अटैक इन ख़ैबर पख्तूनख्वा which has claimed 54 lives and left over 200 injured and all. आपको पता होगा, मैंने कल भी बताया था, here it is actually Pakistan, this is Afghanistan, this is the border, यहाँ पे कहीं पे this region is actually ख़ैबर पख्तूनख्वा region, पख्तूनख्वा यहाँ पे कहीं पे, ठीक है, रफ स्केच में बताएं, यहीं पे कहीं पे होगा। So basically here actually suicide bomb attack happened which killed 54 people and all. I hope you are aware of that. तो कुछ पॉलिटिकल रैली वगैरह थी, सो देयर वाज सम पॉलिटिकल रैली एंड ऑल इन दैट दिस इंसिडेंट हैड हैपेंड, ओके। सो द प्रोविंशियल पुलिस से दैट इस्लामिक स्टेट खुरासान हैज टेकन द रिस्पांसिबिलिटी। खुरासान इसी रीजन को कहते हैं, सो दिस रीजन एक्चुअली, ये वाला रीजन है ना, नहीं शायद यहाँ पे कहीं पे होता है, ये वाला रीजन को खुरासान कहते हैं, ठीक है, ओके। एंड इस्लामिक स्टेट खुरासान मींस इट्स अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज बेस्ड इन खुरासान रीजन, it's a part of ISIS only, okay. So they have claimed the responsibility, the state police of that has said, okay. So just have an idea about it, okay. Yes, actually क्या है, तो good terrorist bad terrorist में differentiation नहीं होना चाहिए, terrorism is a terrorism, okay. In fact there is a statement, it's a very old statement, 2011 का statement Hillary Clinton का, Hillary Clinton was actually the US Secretary of State, US Secretary of State at that time when Obama was the president, and she said snakes in your backyard won't bite only your neighbors. अगर आप सांप पालोगे तो खाली पड़ोसी को थोड़ी काटेगा, आपको भी काट सकता है, means it can bite you also. And there have been incidents where actually the terrorism has struck the people of Pakistan. In fact, last year actually Mr. S. Jaishankar, the India's foreign minister, also repeated the same statement of Hillary Clinton, that snakes in your backyard, ये पूरा डॉट 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 करके पूरा था, यानी he recalls Hillary Clinton's statement. Okay, yes, someone is writing we do not have a definition of terrorist. Actually एक provision है, comprehensive convention on international terrorism. Actually in fact this has been proposed by India, but I think this is yet to be accepted or passed in United Nations. So when this will be passed, there will be a comprehensive definition of what is terrorism. Comprehensive Convention on International Terrorism, CCIT कहते हैं इसको। अगर ये पास हो जाएगा, ठीक है, अगर ये पास हो जाएगा मतलब यूनाइटेड नेशन में, सो व्हाट विल हैपन इज तो देयर विल बी अ क्लियर कट डेफिनेशन कि अगर ये चीज हुआ है तो टेररिज्म है, whether it is done in any country by any person from any religion, race, caste, gender or something like that. तो इसीलिए ये if this will happen, but लेकिन अभी तक ये proposed है अभी, ठीक है, ओके। मतलब अभी तक शायद, जहां तक मेरी नॉलेज है, एक बार चेक करें ना, as far as my knowledge is concerned, it is yet to be passed.
ओके तो इसी की बात करें, आप इसको पढ़ लेना. सो पाकिस्तान नाउ प्लेइंग हेवी प्राइस फॉर इट्स, देखो लिखा है हेवी प्राइस फॉर इट्स डिकेड लॉन्ग एक्चुअली सपोर्ट टू एक्सट्रीमिज्म एंड ऑल. तो इसमें अब नाउ फॉर इज गोइंग इन हिस्ट्री, उतना डिटेल में नहीं जाना है. इज टॉकिंग अबाउट द मुजाहिदीन्स एंड ऑल, पाकिस्तान बैक मुजाहिदीन्स हु एक्चुअली पुश द यूएसएसआर. ये पुरानी बात है, एक हिस्ट्री में था यूएसएसआर जो है ना, वो इट वाज एक्चुअली इन अफगानिस्तान एंड दिस वाज एक्चुअली पुश्ड बैक इन 1989 by the Pakistan supported and America supported mujahideens. तो ये पुरानी हिस्ट्री है, उसमें वो जाने. अब इतना डिटेल आई डोंट थिंक यू आर सपोज्ड टू गो इन डिटेल एंड ऑल. ओके सो इसी पे दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ओके डिबेट ऑन डेटा ओपिनियन में एक आर्टिकल है, इसको हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट फॉर्म्स न्यू पैनल टू रिव्यू ऑल एनएसओ डेटा. आप बताओ तो इसका चेयरमैन कौन है? ऐसे एक दो बार और मैं पूछ चुका हूँ. तो उसी पर डिबेट चल रहा है कि जो एनएसओ का डेटा सही है कि नहीं है. सो देयर लॉट ऑफ डिबेट्स गोइंग ऑन whether this data is correct or not or it has some issues. Okay. So इसी की वो आर्टिकल, अब इसमें इतना डिटेल जाना नहीं है, बार बार सेम तरह की आर्टिकल आ रही, सेम बातें हो रही हैं. एंड अब इसमें यू आर नॉट सपोज टू गो वेरी मच इन डिटेल, बट हाँ प्रणव सेन, मिस्टर प्रणव सेन, यस. ओके सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट दैट. ओके वुमेन डू 7 hours of work, men under 7 hours and all, हाउस वर्क एंड ऑल. अब देखो इसमें क्या है, मतलब एक्चुअली लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट से रिलेटेड है कुछ चीजें, थोड़ा सा जान लेते हैं. जैसे एक आर्टिकल आई थी कुछ दिन पहले 29 जून को ऑन इंडियन एक्सप्रेस, व्हाई इज इंडियाज वर्कफोर्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली मेल डोमिनेटेड. यानी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है 39.5% है इंडिया का, उसमें 66% मेन का है और फीमेल का जो है 8.8% है. आप समझ रहे हो कि स्टिल एक्चुअली इनफैक्ट एक कोट है बहुत फेमस, ओल्ड कोट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, मैंने वो आर्टिकल शायद लगाया नहीं है. ओके आई विल टेल यू. इफ देयर इज जेंडर पैरिटी इन वर्कफोर्स, if there is gender parity in workforce in India, so India's GDP will increase by 27%. 27? हाँ 27%. हाँ तो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा था कि अगर मर्द और औरत की अगर वर्कफोर्स इक्वल हो जाए या जितना पोटेंशियल है कंप्लीट रियलाइज हो जाए, so 27% तक इंडिया की जीडीपी बढ़ सकती है. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया. ओके एक आइडिया होना चाहिए. ओके यस. अब देखो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि देखो इंडिया के फीमेल पार्टिसिपेशन रेट नीचे जा रहा है और एनरोलमेंट ऊपर जा रहा है 87%. इंडिया 2022 फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ब्रिक्स कंट्री के मुकाबले कहाँ पर है. ठीक है, सो दीज आर सेइंग कि देखो इंडिया का यहाँ, चाइना का यहाँ है और बाकी कंट्रीज का और. ठीक है, तो एक अब इसको याद नहीं करना है इतना, तो ग्राफ वगैरह है, जस्ट सी इट है ना, जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. एक और टॉक है हाइब्रिड ईवी व्हीकल. अच्छा एक बताओ कि विच स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू प्रमोट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. इस पर एक एक्चुअली कह सकते हो सॉर्ट ऑफ टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल था. तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इज देयर, हाइब्रिड मतलब दोनों मिला करके, और इट विल वर्क ऑन द पेट्रोल डीजल आल्सो एट द सेम टाइम इलेक्ट्रिक आल्सो. सो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस. यस, फेम स्कीम, वेरी गुड, फेम इंडिया स्कीम, गुड. हाँ ओके फिर एक अकीरा रैंसमवेयर. रैंसमवेयर समझते हो, यू अंडरस्टैंड रैंसमवेयर? जैसे व्हेन इट अटैक्स योर कंप्यूटर, इट विल आस्क फॉर मनी थ्रू ब्लॉकचेन. ब्लॉकचेन के जरिए पैसा मांगेगा आपसे. सो अनलेस अनटिल यू गिव द मनी, योर कंप्यूटर विल नॉट बी अनलॉक्ड. ठीक है, मतलब इस तरह समझ सकते हो, ये पैसा मांगने का मतलब ऑनलाइन पैसा मांगने का मतलब ऑनलाइन एक्सटॉर्शन यू कैन से टाइप थिंग. सो दैट इज व्हाट आल्सो इज इन द न्यूज, अकीरा. तो इट कैन हिट बोथ विंडोज एंड लाइनेक्स. ओके, लाइनेक्स भी एक तरह का आईओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. ठीक है. स्टील्स डेटा, एनक्रिप्ट डेटा, फोर्स विक्टिम्स टू पे डबल रैंसम, है ना, आपसे पैसा भी निकलवा सकता है, बहुत कुछ कर सकता है. ऑल दीस आर वेरी डेडली थिंग एंड ऑल. तो अकीरा के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए. ओके हाँ, ऑनलाइन वसूली, यू कैन से इट्स ऑनलाइन एक्सटॉर्शन. सो नाउअडेज दीज आर आल्सो बिकमिंग वेरी डेडली थिंग, और ये सब बहुत खतरनाक बन रहा है आजकल, आपको पता होगा. तो एक चीज है जो इंडिया की साइबर क्राइम को रोकने के लिए, व्हाट वी कॉल इट एज सर्ट इन, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया. ये इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा. सर्ट इन इज देयर, हेडक्वार्टर इन न्यू दिल्ली. ठीक है, इसका काम एक्चुअली टू काउंटर द साइबर अटैक्स, साइबर अटैक्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है. ठीक है, सो जस्ट हैव एन आइडिया अबाउट इट. फिर ये है एट 8.2% इंडिया कोर सेक्टर ग्रोथ टचेस 5 month हाई इन जून. तो कोर सेक्टर में देयर आर 8 इंडस्ट्रीज. आई हैव टॉट इन द पेड क्लासेस व्हाट आर दोस 8 इंडस्ट्रीज, मैंने पढ़ाया है. ठीक है,
और इस 8 इंडस्ट्रीज का जो एक्चुअली शेयर है वो 40% के अराउंड होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कैलकुलेट करने में. So when IIP is calculated, almost 40% actually contribution is of these 8 countries, 8 sectors of economy, है ना. 8 कंपनीज मैंने बताया, 8 सेक्टर कोर सेक्टर्स है इंडिया का. Go and find out what are those 8, है ना. ठीक है. सो ही बता रहे कि उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है. टचेस 5 मंथ हाई, पिछले 5 महीने में सबसे हाईएस्ट हो गया. नहीं यहाँ से अगर आप देखोगे, सो इन द लास्ट 5 मंथ्स यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा है ना. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. ओके. यस. एल नीनो इफेक्ट विल सप्रेस रेनफॉल एंड ऑल. अच्छा एक चीज बताओ कि एल नीनो फेनोमेना इज सीन वेयर? इंडियन ओशन, अरेबियन सी, आर्कटिक ओशन, नन ऑफ द अबव. ये मैंने कई बार पढ़ाया है. सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू ऑल टू आंसर इट. बताइए एल नीनो फेनोमेना कहां देखा जाता है? Which water body you will see El Nino? अगर कोई none of the above बता रहा है तो उसको आंसर बताना पड़ेगा where. I think it's Pacific. Yes, you are right, Gauri. हाँ, Pacific Ocean में. ठीक है. Okay, D is the right answer. Yes, सानी अंसारी, गौरी, प्रिया, चवन, अनामिका, नितिका. हाँ, देखो एक्चुअली यहाँ पे कुछ होता है. When something happens here, साउथ पैसिफिक ओशन में, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन मैंने बताया भी है. इट एक्चुअली अफेक्ट्स साउथ वेस्ट मानसून. सो साउथ वेस्ट मानसून गेट्स वीकर, है ना. यही तो ज्योग्राफी की खास बात है. यहां कुछ होता है और उसका इंपैक्ट यहां पड़ता है. यस, ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज कनेक्टेड इन ज्योग्राफी. यू विल नॉट रियलाइज, आपको पता भी नहीं चलेगा कहां की चीज कहां असर करती है. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. लिख रहे हैं ना कि एल नीनो विल सप्रेस रेनफॉल इन द सेकंड हाफ ऑफ मानसून. अगर एल नीनो आएगा तो शायद बारिश कम हो जाए एल नीनो के कारण. एल नीनो आता है पैसिफिक में और असर होता है हमारी बारिश को. ओके, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट. यस, अबाउट इट, है ना, कि दैट इज हाउ द गॉड हैज मेड द ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इन सच अ वे दैट द लॉट ऑफ इंटरकनेक्शंस, इंटरडिपेंडेंस, है ना. ओके, म्यांमार जानता है एक्सटेंड्स स्टेट ऑफ इमरजेंसी फॉर 6 मंथ्स. इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा. देयर इज अ कू दैट हैपेंड ऑन 1 फरवरी 2021. एक मिलिट्री कू आया था 1 February 2021 म्यांमार में. Please go and read about it. That is also very important for you. So thank you everyone. Please subscribe to our channel, follow us Instagram, Facebook, Telegram, and download the BYJU'S exam prep app. सबको like button press कर दो guys. We are seeing only 13 likes. At least 30 plus likes ले जाओ everyone. Yes. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.